So very good morning dear student, welcome back in today's science class. So dear student, as you know that in the previous class we discussed about the types of combustion. In that we discussed the different 4 types of combustion: spontaneous combustion, rapid combustion, slow combustion and explosion. So these we discussed in the previous class the different 4 types of combustion, and also we discussed about the some inflammable substance or highly inflammable substance like LPG, CNG, petrol, kerosene, like that. In this today's class, today's class is about the first we discuss about the principle of fire extinguisher, and then we discuss about the different types of fire extinguishers and the working of fire extinguisher, and then next we discuss after that we discuss the flame and its structures or the different regions of flame. So without delay we can start our today's class by the first topic, that is the principles of fire extinguishing. So principle in the fire extinguishing means what are the ways or what are the main things that is support to us to put off fire or control over this fire. So dear student, as you know that this fire is a very hazardous or very harmful for us or for the nature, because हमें पता है कि इससे बहुत सारा नुकसान होता है हमारा, है ना. एक तरह से ये क्या है, फायर जो है हमारे लिए एक हैजार्डस और एक डिस्ट्रॉय या डैमेज करने वाला एक पहलू है जो बहुत नुकसान करता है हमारे लिए. एंड देयर वाज मैनी, यू कैन से दैट मच मोर loss of life and property is associated with this fire, and this fire can be taken place due to the many reasons, not only a single reason for that. There are the many reasons associated with this fire. This fire can be taken place due to the short circuit. This is taking place due to the leakage of gas in the kitchen. This can be taken place by the explosion of firecrackers, the explosion of gas cylinder, and spreading of kitchen fire. So means बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण क्या ये फाइन सडनली कोई फायर एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी वे में, और ये लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्रॉपर्टी को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकता है. क्योंकि आज के दिन अपन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और ये सब आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं कि ऐसे आग लगने से इतने लोग मर गए, जल गए और इतना नुकसान हो गया. तो एक तरह से हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है. तो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सके, हाउ वी कंट्रोल ओवर दिस फायर. So as there are the many inflammable and combustible substances in our houses, buildings, offices, it is important to control the fire and prevent it from the spreading. तो क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपन यूज़ करते हैं जिससे सडनली कोई भी फायर एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है. वी डोंट कम टू नो दैट, या वी नो हाउ to control over this type of a fire accident. Okay, so now we discuss some important things by which we can control over the fire. First, removal of combustible substance. So first thing is that removal of combustible substance or the fuel. Means if you remove the combustible substance or the fuel from that area, suppose that कहीं पे भी एक लकड़ी का खूब सारे लट्ठे पड़े हैं या फिर गैस सिलेंडर पड़े हैं, तो यदि by chance by any reason, by the short circuit or any gas explosion
or cylinder leakage, if the fire is taking place in that area, and if we want to control over that fire, so the one thing is that one principle that involved in that control over that fire is that the removal of combustible substance और फ्यूल, कि जो फ्यूल पड़ा है, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस पड़ा है, उसको वहां से रिमूव कर दो। सपोज दैट लकड़ी का लट्ठे पड़े तो जो जल रहे हैं उससे दूर वाले जो दूसरे लट्ठे उसके पास में पड़े हैं वो सब लकड़ियां वहां से हटा दो, हाँ एनी हाउ, तो वो जो पड़े जो जल रहे हैं वही जल जाएंगे। उसके बाद में फायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या बुझ जाएगी या कंट्रोल में आ जाएगी। और यदि वो पूरा दूसरा फ्यूल भी उसके पास में पड़ा रहेगा तो वो कंटिन्यूली क्या होगा, जलता रहेगा। सो द बेस्ट थिंग इज दैट रिमूव ऑल द कम्बस्टिबल सब्सटेंस, और पॉसिबली जितना हो सके उतने कम्बस्टिबल सब्सटेंस को या फ्यूल को उस प्लेस से आपको क्या करना है, हटाना है। So now see in your textbook, in this case or the process, all the combustible substances need to be removed from the building or residential site. However, it may not be the practically possible in a short span of time. जैसे अब देखा जाए तो ये शॉर्ट टाइम है, इतनी जल्दबाजी में वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हो सके जितना आप वहाँ से उस चीज को फ्यूल को हटा दो ताकि जितना जलना हो उतना जले, उसके बाद वो फायर कंट्रोल हो जाएगी। ऑल्सो द एंटायर बिल्डिंग में बी मेड अप ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, लेकिन हो सकता है कभी किस कंडीशन के दैट वो बिल्डिंग जिसमें आग लगी वो पूरी जो है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस से बनी हुई हो जो कम्बस्टिबल हो। सेकेंड थिंग, द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर। Supporter or O2 of combustion. सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की उसको अपन कुछ ऐसा करें हम जिसकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाए। सो फॉर दैट वी यूज वाटर, कि हम उसके ऊपर पानी डालते हैं ताकि पानी की लेयर बन जाए और ऑक्सीजन का कांटेक्ट कम हो जाए, या फिर उसके ऊपर अपन मिट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं ताकि सैंड की एक लेयर बन जाए और फायर के बीच में और ऑक्सीजन का जो है वो उसके कांटेक्ट टूट जाए। या फिर वी सी दैट वी रैप द हैवी ब्लैंकेट ओवर a person whose body catch fire. So why we wrapped that blanket? Because we want to cut the supply of oxygen from the outside. और ऑक्सीजन की सप्लाई यदि कट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगी, क्योंकि we know that the oxygen is necessary for the fire. It is a supporter for a fire. So now see, in the previous activity you have observed that a candle gets extinguished when kept under the closed glass chimney due to the lack of oxygen. So यहाँ पे भी हमें क्या करना है, if the oxygen supply is cut off, the fire can be put off. यहाँ पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है क्योंकि we want to control over the fire, हमें आग बुझाना है anyhow. So this principle is used in most fire extinguisher. The detailed working of fire extinguisher is explained in the next section. जो आगे सेक्शन आएगा उसमें अपन और भी एक्सप्लेन करेंगे। Converting by this covering the object or a person of on fire with a blanket also cut off the oxygen supply and helps it in putting the fire off. So this is usually done when the living things catch the fire. Sand भी है हमारे पास में, sand में भी also we used हमारे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी होते हैं जिसको हम स्प्रे करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वो स्प्रे करके उसके भी क्या है ऑक्सीजन का सप्लाई का कांटेक्ट जो है वो अपन कट ऑफ कर देते हैं ताकि वी कैन कंट्रोल ओवर दैट फायर। एंड थर्ड वन लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर।
थर्ड जो है हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर को लो डाउन कर लो, क्योंकि वी नो दैट द इग्निशन टेम्परेचर मींस इट्स अ मिनिमम अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बर्निंग, और उसी इग्निशन टेम्परेचर को अपन लो डाउन कर लेंगे, कम ले आएंगे तो वो आग जलेगी भी नहीं, यानी वो सब्सटेंस वो जलेगा भी नहीं। सो थर्ड थिंग हमारे पास में क्या है, मैं कि किसी भी सब्सटेंस का या कम्बस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर को लो डाउन कर दो, कम कर दो। So if the ignition temperature of the burning material is lowered, then the fire will be put out. This is usually done by the pouring water over the burning object. और ये किस तरह से क्या कर सकते हैं अपन ना, उसमें पानी छिड़क के पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो लकड़ी क्या होगी, गीली हो जाएगी, उसका और इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, काफी ज्यादा जो है वो हो जाएगा उसके, तो उससे क्या होगा, वो लकड़ी बुझ जाएगी। ठीक है। However, water can be used only when the material like wood and paper. लेकिन वाटर भी अपन कब यूज कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में भी, पर्टिकुलर केसेस में वी कैन यूज द वाटर, बट द फायर which is caused due to the electric spark या short circuit या due to some this petrol and diesel, in that case we cannot use the water, क्योंकि उस केस में वाटर को अपन यूज नहीं करेंगे। इफ यू यूज वाटर इन द केस द फायर इज कॉज्ड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, and we know that this water is a good conductor of electricity, so the person which used that water, he or she maybe got this get electric shock, or her body or his body may be electrocuted due to this water, because water is a good conductor of electricity. And on the other hand, if the fire is taken place due to this petrol and diesel, so if we spread water on that, so we know that this oil, petrol and diesel is water lighter than water, this water, so it's coming on a upper surface, and that fire may be water in a more manner. So क्योंकि पूरा जितना भी वाटर के कारण क्या होगा, ऑयल जो होगा वो वाटर के सरफेस पे आ जाएगा और आग बड़ी तेजी से और ज्यादा भड़क जाएगी, तो उस केस में अपन ना वाटर यूज नहीं करते हैं। ओके, सो however the water can be used only when the material like wood and paper etc are on the fire. It cannot be used in the case of electrical fires, as water being a good conductor of electricity can give electric shock to the living things. Also, water cannot be used to extinguish the fire caused by the fuels such as the petrol, kerosene and diesel, as water being heavier than this material settles down at the bottom, so it is unable to cover the floating oils over the it that can continue burning, क्योंकि पानी तो हैवी होता है, वो तो नीचे हो जाएगा बॉटम पे, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, और वो आग जो है वो कंटिन्यू जलती रहेगी। सो दीज थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन और पुटिंग ऑफ फायर और टू कंट्रोल ओवर द फायर। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशन। Fire extinguisher is nothing but it is a you can say that it's a tool or instrument which is used to put off the fire, to control over the fire. Generally आपने देखा होगा कि जब भी if you visit the cinema hall, a theater, on the hospital, shopping center, mall या फिर पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे एक सिलेंडर, रेड कलर का आप सिलेंडर देखा होगा। So that red color cylinder is nothing but that is a fire extinguisher, और वो फायर एक्सटिंग्विशर किस काम में आता है, आग को बुझाने के काम में आता है। ओके, तो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एक गैजेट है which is used to control over the fire. So now see, there are the two different types of the fire extinguishers commonly used. First one, the stored pressure type and cartridge operator type. In a stored pressure type, the fire extinguisher, the carbon dioxide is stored in a liquid form under the very high pressure cylinder.
यानी जो स्टोर प्रेशर टाइप का जो होता है, 2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, प्रेशर स्टोर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड सेकंड कार्ट्रिज ऑपरेटर टाइप एक्सटिंग्विशर। तो जो स्टोर प्रेशर टाइप का होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। ऑन रिलीजिंग द नॉब द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड एक्सपेंड्स ऑन द एंड engulf द फायर। और जैसे ही नॉब को ओपन, जैसे स्ट्रक करते तो नॉब टूट जाती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड फॉर्म होती है वो रिलीज होती है, और वो रिलीज होने के बाद में क्या करती है, वो पूरी आग के ऊपर कवर हो जाती है, उसको कंट्रोल में ले लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग द हैवियर देन द ऑक्सीजन, एंड एज वी नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए हैवियर देन द ऑक्सीजन, इसके लिए क्या होगा, ऑक्सीजन नीचे रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर हो जाएगी। It covers the combustible substance and cuts off the oxygen supply. Also, the vapors of the carbon dioxide rapidly cool down and bring down the ignition temperature of the material. Both these conditions help in the putting out the fire quickly. तो ये दोनों कंडीशन में जो है वो हमारे लिए काफी यूजफुल है कि हम आग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। Here this सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 67 पे है, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज ऑल्सो गिवन हियर। ए कॉमन फॉर्म ऑफ द कार्ट्रिज ऑपरेटेड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaCO3 plus H2SO4। So ये जो रिएक्शन करता है that forms सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2। सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें ये रिएक्शन होती है, दिस इज नोन एज व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हेन दिस की जो सिलेंडर होता है सिलेंडर, देन यू कैन सी दिस वन है, तो इस सिलेंडर के अंदर क्या पड़ा होता है, इसके अंदर जो है वो अपना एसिड की बोतल होती है एक, और उसके बाद जो पड़ा होता है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जैसे ही इसको स्ट्रक करते हैं नॉब को, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके it forms this sodium sulfate and it releases this carbon dioxide, and this carbon dioxide gas is used to put or control over the fire. Okay. Now next the flame and its structure. So flame and its structures, if we say this is flame of a candle, तो जनरली आपने कि बड़े गौर से भी एक फ्लेम को देखा होगा, तो यू कैन सी द डिफरेंट रीजन इन अ डिफरेंट कलर इन अ कैंडल फ्लेम। एक कैंडल फ्लेम को आग जलती हुई देखते हो तो आपने अलग अलग कलर देखे होंगे। सो वो कलर जो है वो किस कारण से है और वो क्या उसका एप्लीकेशन, क्या यूटिलाइजेशन है। So then we discuss in the next topic that flame and its structure. So everybody you see there are the different four reasons or four genre of a candle flame. The candle emits light in सभी अपने पेज नंबर 67 टेक्स्ट बुक में देखिए सभी। The candle emits the light in the form of a flame. Flame is the visible part of a fire. Flame is nothing but it is a visible part of a fire. Is there any difference between the flame of a candle in LPG stove or matchsticks?
एलपीजी का जो आप देखे होगे तो बिल्कुल ये ना ब्लू कलर में जो आप देखते होगे, और यदि मैच स्टिक देखोगे तो उसमें येलो कलर होता है। तो वाई इट इज बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ कंबशन, कि एक में जो है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, दूसरे में जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, उसके कारण कलर में डिफरेंस देखने को मिलता है। There are the differences in the color of a flame, and the color of a flame is depends upon the nature of a combustible substances and the amount of oxygen supply. कि this is depends on what? This color. The color of a flame is depends on the two things: what type of material we used as a combustible substance or the fuel, and second thing, how much oxygen we supply, or how much amount of oxygen is utilized for the combustion, or supply is provided from outside. So on the basis of these two things, the color of a flame is different. Okay, a flame has the different color which are referred as what? The different regions or the zone of a flames. Let us understand the structures of a flame by observing different regions of color, or by this figure that is given in your textbook. Everybody see in your textbook. So first one, the innermost zone. You can see this innermost zone. This portion at here, the base. This is called what? The innermost zone. This is the uppermost zone. Middle zone. So these are the three different parts. So first we discuss the innermost zone. This is the black in color and the innermost zone of a candle. It is a dark zone as no combustion is taken place due to the lack of oxygen. ये सबसे इनरमोस्ट की काफी अंदर की तरफ है, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? डार्क होता है। और डार्क वाइट इज डार्क बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि इसको सब अंदर होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबशन नहीं होगा। सो इट इज डार्क जोन एंड एज देयर विल बी नो कंबशन इज टेकिंग प्लेस in this region, innermost zone, because of water, due to lack of oxygen. It contains the unburnt wax particles. It is the least hot region, और combustion ही नहीं होगा तो ये सबसे कम गर्म एरिया होगा, रीजन होगा। This zone is also called non-luminous zone, और इसको non-luminous zone भी अपना कहते हैं। फिर middle zone और middle region. In this zone, the combustion is partially due to the insufficient supply of oxygen. यहाँ पे partially होता है, नहीं ज़्यादा होता है, नहीं कम होता है, लेकिन थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई होने के कारण यहाँ पे partially combustion होता है। It is the yellowish in color and moderate hot, और इसका जो कलर होता है मिडल का वो कैसा होता है? येलो कलर होता है, मॉडरेट हॉट होती है, नहीं ज़्यादा गर्म होती है, नहीं ज़्यादा ठंडा होता है। This zone is called the luminous zone. इनरमोस्ट जो नॉन ल्यूमिनस है ये ल्यूमिनस जोन है, ठीक है। देन लास्ट वन, द आउटरमोस्ट जोन. दिस इज ए जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन एंड इट्स गिव अ ब्लू कलर. इसको कंप्लीट कंबशन होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि सबसे बाहर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है. दैट्स व्हाई द कंप्लीट कंबशन इज टेकन प्लेस एंड इट गिव्स द ब्लू कलर एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट. ये जो फ्लेम है वो अपन काम में लेते हैं खाना पकाने के लिए. In this zone, the wax burns completely, producing carbon dioxide, water vapors, and energy in the form of heat and light. This zone is the hottest region of the flame, and this region, this area, this outermost region is utilized by the goldsmith. जो सुनार लोग होते हैं वो इसी रीजन को जो ऑर्नामेंट्स बनाते वहाँ पे, ज्वेलरीज बनाते वहाँ पे ये यूज करते हैं. Goldsmiths blows this outermost zone of the flame with a metal blow pipe to melt the
gold and silver as it is the hottest region. Why it is? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबसे गर्म पार्ट होता है. Do all the material burn with a flame? No, क्योंकि सभी फ्लेम के साथ में बर्न नहीं करते. You will be observed that materials such as the charcoal do not burn with a flame. The substance that vaporized during the burning gives a flame. यानी वही सबस्टेंस जो जलने के दौरान वेपोराइज हो जाता है, उसमें वेपर बनती है, वही फ्लेम के साथ में फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज दूसरे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कपूर, वैक्स, कैरोसिन, ऑयल वेपोराइज ऑन बर्निंग एंड हेंस दे प्रोड्यूस फ्लेम. तो ये जो है ये जितने भी मटेरियल्स है वो क्या करते हैं, वो वेपोराइज हो जाते हैं ऑन बर्निंग एंड इट गिव्स वाटर फ्लेम. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जो वेपोराइज नहीं होते जैसे चारकोल है, तो इट नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ फ्लेम. वी कैन नॉट सी एनी टाइप ऑफ फ्लेम. Okay, so this is all about today's class. In the coming class, after that we discuss about the fuel and efficiency and the calorific values, and then we discuss about the ideal fuel and some characteristics of a ideal fuel. Okay, so thank you. Have a nice day.